Hello everyone. Today we are going to start the fourth chapter of standard 10, refraction of light at a plane surface. Refraction of light at a plane surface. So ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਵਰਡ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ refraction. Okay, you may know about the reflection, what it is. Let me tell you the idea about reflection. The reflection was something when we when a light ray fall on a mirror and reflects back into the same medium. So this is known as a reflection. Here the angle of incidence is equals to the angle of reflection. Okay, but here today we are going to start refraction. What is refraction actually? Refraction ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Suppose ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਿਤੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ, ਕੱਚ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਲਓ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਰ ਫੋਕਸਿੰਗ ਅ ਲਾਈਟ ਔਨ ਅ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੋੜੀ ਟੇਢੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਓਕੇ, ਸਿੱਧੀ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੇਢੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਰੀਫਰੈਕਸ਼ਨ। ਰੀਫਰੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਲਾਈਟ, ਜਿਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਈਟ ਰਿਫਲੈਕਟ ਬੈਕ ਇਨਟੂ ਦਾ ਸੇਮ ਮੀਡੀਅਮ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੀਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋਣਗੇ, ਮੀਡੀਅਮ 1 ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ 2. Let us have a core discussion about the refraction. Okay, refraction. Refraction means the change in the direction of path of light when it passes from one transparent medium to another transparent medium is called the refraction. ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੀਡੀਅਮ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆ, ਦੋ ਮੀਡੀਅਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੀਡੀਅਮ 1 ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ 2. ਆਊਟ ਆਫ these two mediums, one will be the rarer medium and another will be the denser medium. What does rarer and denser medium means? Suppose this medium, first medium is air, ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਆ, ਤੇ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਮੀਡੀਅਮ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਵਾਟਰ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਮੀਡੀਅਮ, ਉਹ ਏਅਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਆ? ਡੈਂਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਡੈਂਸਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋਏਗਾ that will be known as a rarer medium. I hope you got that. So we will always have two mediums. First is rarer and second is denser. So refraction ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੀਡੀਅਮ ਵੱਲ, like when a light travel from rarer to denser, or we can say light travel from denser to rarer, it bends. Okay, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਲਾਈਟ ਦੀ, ਆ ਬੈਂਡਿੰਗ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਟ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਂਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। the bending of light is known as a refraction. ਸੋ ਇਹ ਬੈਂਡਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਇਹ ਰਿਫਰੈਕਟ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਪਾਰਟ ਇਹਦਾ ਰਿਫਲੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨਾ, ਕੁਛ ਪਾਰਟ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 4-5% ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਰਿਫਲੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ surface and here is rarer medium and this is the denser medium. rarer ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ 에ਅਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ,
तो डेंसर च किहड़ा लेना, मान लो वाटर, होर भी हो सकता साडे कोल गलास हो सकता आ, कैरोजीन हो सकता, पेट्रोल हो सकता आ, कोई भी मीडियम हो सकता है ना। सो जो आप चैप्टर पढ़ते जावांगे ना तो उदों तुहानूं इस चीज़ बारे समझ आउंदी जाऊगी, डोंट वरी। ओके, सो आपां की कीता, लाइट इस सरफेस के उत्ते इंसीडेंट कराई, वी इंसीडेंट अ लाइट। मैं ये उम्मीद करदा कि तुहानूं ये चीज़ां पता होणगियां। जिहड़ी लाइट आउंदी आ इंसीडेंट, मतलब जिहड़ी आपां लाइट फॉल करवाउने उहनूं की बोलदे आपां इंसीडेंट रे। जिवें रिफ्लैक्शन के केस तुसीं पढ़ के आए, दिस इज़ कॉल्ड इंसीडेंट रे, इंसीडेंट रे। दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लैक्टेड रे, है ना। जिहड़ी लाइट जिहड़ी रिफ्लैक्ट कर जाती इहनूं आपां रिफ्लैक्टेड रे बोलदे आ। सो दिस इज़ अ इंसीडेंट रे, इंसीडेंट रे। इत्थे ना आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर लैंदे आ। लेट वी ड्रॉ अ नॉर्मल। दिस नॉर्मल इज़ नॉर्मल टू द सरफेस। जिस सरफेस ते लाइट फॉल कर रही है ना, उस सरफेस ते नॉर्मल परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर लेने आ। सो कीप इन माइंड, जो लाइट रेयर तो डेंसर वाल जाती आ, वैन लाइट ट्रैवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इट इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट इट बेंड्स and bends towards the normal, bends towards the normal. Look, a light सीधी जा रही सी ना, सीधी जान रही, सीधी जाने की बजाय किधर नूं बेंड हो गई है, नॉर्मल दे वल। सो ये नॉर्मल दे वल, जो लाइट रेयर तो डेंसर वल जाती आ, लाइट हमेशा ही इदां करती आ, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। सो दिस विल बी नोन एज refracted ray. This was reflected, so leave this thing reflection, so we will focus on the refraction only. Okay, so this is the incident ray, this is the refracted ray. Now we will draw an angle between the normal and incident ray. This is the incident ray. This will be known as angle of incidence, and the angle between the normal and the refracted ray will be known as a angle of refraction. Understand? It is clear from this figure that angle of incidence is greater than angle of refraction. Okay, so this was the case when when light travel from rarer medium to the denser medium. Okay, I hope रेयर ते डेंसर मीडियम क्लीयर ने। रेयर मतलब संघना घट, डेंसर मतलब ज़्यादा संघना, एयर ते वाटर आपां लिया। ओके, सो ये तो केस सीगा जो लाइट रेयर तो डेंसर वाल जाती है। रिवर्स इज ऑल्सो पॉसिबल, लाइट कैन ऑल्सो ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। वट विल हैपन इन दैट केस? सपोज दिस इज योर नॉर्म द surface, here is the rarer medium and this is the denser medium. Okay, so now the light is traveling from denser to rarer medium like this. Light is trying to travel from denser to rarer medium at some particular angle. So obviously we will draw normal to the surface. Now this is the incident ray and this is the normal. The angle between incident ray and normal is known as angle of incidence. इस केस दे विच की होया सीगा, जदों लाइट रेयर तो डेंसर वाल जाती है, ये नॉर्मल दे वाल बेंड कर गई सी। बट नाउ इन दिस केस व्हेन लाइट विल ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो ये तुसी रूल याद रखना है कि जो लाइट रेयर तो डेंसर वाल जाती आ, ये नॉर्मल दे वाल बेंड कर जाती आ। जो लाइट डेंसर तो रेयर वाल जाती आ तो वो नॉर्मल तो परा बेंड कर जाती है। ओके, सो दिस विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. In this case, it is clear that angle of incidence is less than angle of refraction. Understand? I hope these 2 points are clear. So this bending of light is known as refraction. So इस दे नाल ही कुछ पार्ट लाइट दा रिफ्लैक्ट भी कर जाता, उसे मीडियम च चल जाता वापस, उन्होंने भी आप नाल कंसीडर कर लेने।
Okay, so this is the angle of refraction, refraction when light travel from rarer to denser medium, and this is the refraction when light travel from denser to rarer medium. Okay, कई बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚ डायग्राम ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, लाइक आ ਤੁਹਾਡਾ रेयर मीडियम सॉरी ਉੱਪਰ ਡੈਂਸਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਆ नीचे रेयर ਲੈ ਲਿਆ, ਆ नॉर्मल ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ है ना। सो लाइट डेंसर तो रेयर वाल जाती है ना, लाइक दिस। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो गल एक ही है, पुट्ठी करके डायग्राम बना ली है। सो कन्फ्यूज नहीं होना, तुम देख लेना मीडियम केड़े तो केड़े वाल जा रही है। दिस इज द एंगल ऑफ इंसीडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वन ऑफ द सेम थिंग। ओके, कि हुण क्वेश्चन ये आता कि हमेशा ही इदा होंदा जो लाइट रेयर तो डेंसर वाल जाए या डेंसर तो रेयर वाल जाए, इन्हें बेंड करना ही करना है। ओके, सो ये क्वेश्चन कई बार पेपर तुहाडे पूछा गया। सो लेट अस फाइंड इट आंसर। मेरा सवाल सीगा कि इज इट नेसेसरी दैट लाइट विल ऑलवेज रिफ्रैक्ट, लाइट विल ऑलवेज रिफ्रैक्ट। आंसर हैगा नो, हमेशा लाइट रिफ्रैक्ट नहीं करती। हो सकता है कि लाइट मान लो सरफेस आ रेयर मीडियम है तो डेंसर मीडियम है, लाइट किसी एंगल ते आ ही नहीं रही, लाइट सीधी नॉर्मल सरफेस ते फॉल कर रही है। ओके, जो लाइट सीधी नॉर्मल ते सरफेस नॉर्मल सरफेस ते फॉल करूगी, उस सरफेस का 90 डिग्री एंगल बना के या कह लो एंगल ऑफ इंसीडेंस की है 0, तो लाइट की है तुहाडी सीधी निकल जाती है। ओके, so this is your answer, that when light falls normally on the surface, light never refract. Understand? Okay, now the question arises, why this bending take place? ये bending क्यों होंदी है जो लाइट किसी मीडियम to दूसरे मीडियम च जाती है? So why there is bending of light? Okay, so the कभी कभी question as a cause of bending भी आया, cause of bending of light, or you can say cause of refraction of light, cause of refraction of light. So what is the cause of refraction? Keep in mind, keep few things in mind. The speed of light we know, that is c, that is equals to 3 into 10 raised to power 8 meter per second, that we all know। वैसे यदि असल वैल्यू नहीं होंगी, आप राउंड ऑफ करके लेने असल दे विच 299792458 मीटर पर सेकेंड होंगी है, आप 3 into 10 raised to power 8 राउंड ऑफ करके ले लेने। एनी हाउ ये हैगी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर या वैक्यूम, ये आप सी ना ही हमेशा लिखना। ओके, जो आप स्पीड ऑफ लाइट इन किसी मीडियम च लिखांगे सो उन्होंने आप लिखांगे वी दे नाल, स्मॉल वी दे नाल। ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर होंदी है 2.25 into 10 raised to power 8 meter per second, and speed of light in glass is equals to 2 into 10 raised to power 8 meter per second. So जेड़ा ग्लास है ना, द ग्लास मीडियम इज डेंसर देन वाटर एंड वाटर इज डेंसर देन एयर। सो जिन्ना ज़्यादा मीडियम डेंसर होंदा जांदा ना, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट डेंसर मीडियम बिकम्स मोर स्लोअर। डेंसर द मीडियम, स्लोअर इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ओके, सो यही द कॉज है बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट द कॉज किया व्हेन अ लाइट ट्रेवल फ्रॉम one medium to another, the speed of light changes. Like in this case, when light travel from rare to denser medium, it slows down. Obviously denser medium जिथे भीड़ भाड़ वाला इलाका होवे साडी स्पीड स्लो ही हो जाती हमेशा। So when light travel from rare to denser medium, it slows down. Due to this slow down in the speed of light, it bends towards the normal. While in case when light travel from denser to rarer medium, here the speed of light was less. Now when it reaches at the surface, the speed of light becomes faster, hence it bends away from the normal. Okay, so this is the key cause that why there is a bending of light, or we can say refraction of light. So you have to remember these values
forget about this. You can remember this for your convenience, but we will continue with 3 into 10 raised to power 8 and 2.25 into 10 raised to power 8 and 2 into 10 raised to power 8 meter per second. Keep these 3 values in mind. We will use these values again and again in your coming articles. Also keep one thing in mind. In this case, even though there was no bending, no refraction, but obviously the speed will change. ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲਾਈਟ ਦੀ ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਈਟ ਦੀ ਬੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਦੂਸਰੇ ਮੀਡੀਅਮ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ 0 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਫਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡੈਂਸਰ ਤੋਂ ਰੇਅਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਡੈਂਸਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਸਪੀਡ ਨੇ ਘਟਣਾ ਜਾਂ ਵਧਣਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। laws of refraction, there were laws of reflection ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 9th standard ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ। Now in this class you will discuss about the laws of refraction. The first law is the incident ray, refracted ray and the normal at the point of incidence all lie on the same plane. Kia the incident ray, the refracted ray and the normal at the point of incidence all lie on the same plane. Second kia the ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is a constant for a pair of the media. That is, the ratio of the sine of the angle of incidence I to the sine of the angle of refraction R is constant for the pair of a given media. In mathematically ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? That is the ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is a constant. ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ constant ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? mu. ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ? mu, MEW, mu. The ratio of the sine of the angle of incidence, that is the sine of angle of incidence, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, sin, cos, tan, cosecant, secant and con, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ sin ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। The ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is constant for a given pair of medium. ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਤੇ ਵਾਟਰ ਦਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਆ। ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 에ਅਰ ਤੇ ਗਲਾਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਤੇ ਗਲਾਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਮਿਊ, that will be constant, that will have a constant value. In some books it also can be written with the letter n, so don't be confused with that. So this is just a notation, but in your 10th standard we will use mu only. Okay, this mu plays a very important role. This mu decides that how much light will bend. Okay, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਊ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਹਾਊ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਿਊ ਇਜ਼, ਹਾਊ ਇਟ ਪਲੇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਇਨ ਬੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਲਾਈਟ, ਹਾਊ ਇਟ ਟੈਲਸ ਅਸ that how much light can be bent. Next is effects on speed, wavelength and frequency due to refraction. ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੇ ਪੜਿਆ when light travel from rare to denser, denser to rare, its speed changes. When light travel from rare to denser, it slows down, and when it travel from denser to rare, it slows down. It gets faster. Okay. Now we are going to discuss about other factors, that is the wavelength and frequency. Remember the relation that you know, V is equals to f lambda, where V is the speed of light, f is the frequency and lambda is the wavelength. When light travels from rare to denser,
even though its speed changes, but its frequency remains unchanged. Because why does the frequency of light never changes when it travels from one medium to another? Because the frequency depends upon the source only. मतलब ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ बल्ब तो आई आ वो बल्ब तो ही आई होनी है, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ट्यूब लाइट तो आई आ वो ट्यूब लाइट तो, ਜਿਹੜੀ लेज़र तो आई है लेज़र तो, ये सोर्स ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ, सोर्स ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਹਦੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬਟ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ, ਸਪੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ 에ਅਰ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਾਟਰ, ਸਪੀਡ c ਸੀਗੀ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ v। So we can say here v1 and here will be v2, or whatever the notation you want to give. The third thing is wavelength. Wavelength is what? The length between the waves. We know about mechanical transverse and longitudinal wave. You have discussed about this in your 9th standard. The length of wave is known as the wavelength. This is noted by lambda. Okay, so here when a light travels from one medium to another, its wavelength also changes. So keep one thing is in your mind: frequency of the light remains unchanged, whereas wavelength and the speed of the light always changes. How does wavelength changes? When light passes from rare to denser medium, wavelength decreases. Okay, when light travels from denser to rarer medium, the speed of light increases and hence its wavelength increases. जे wavelength, जे speed increase करूँगी तो wavelength, क्योंकि ये तो constant ही रहनी है, जेकर speed increase करूँगी तो wavelength भी increase कर देगी, जेकर speed decrease करूँगी तो wavelength भी decrease कर देगी। So इस relation ना तुसी याद रख लेना। Okay, so this is all about today. Remember the topics that we discussed and go through from your book and have a core understanding about the concept. You will need these concepts in 4th chapter as well as in the next chapter, that is 5th, refraction through the lens. So सानू इन्हां सारे concept दी उत्थे भी लोड़ पेगी। So इन्हां चीज़ां नूं ध्यान च रखना, याद कर लेना, values याद करनी है, and laws of refraction भी obviously याद करने हैं। So अगली वीडियो तक तुसीं इन्ना काम कर लेना। When we will meet in next video. Till then, stay safe and stay healthy. Thank you.